India has reported 268 fresh cases of coronavirus infection and 2 deaths in the last 24 hours. As per the Union Health Ministry's COVID bulletin today, active cases comprise of 0.01% of the total infections, and the country's recovery rates as of now stands at 98.80%. According to the ministry, government officials have warned that the next 40 days will be crucial in determining the possibility of a resurgence of COVID-19 cases in India, urging people to follow safety protocol and completing their vaccination. As of now, Karnataka has around 1,275 active cases, Kerala 1,389 active cases, Maharashtra 164 active cases. All right, I'm being joined by my reporters from across the nation. Mohit Gupta is joining us from Aligarh in Uttar Pradesh. Deepak Sharma is joining us from Haryana. Rajat Kumar is joining us from Noida. I'll go to you, Rajat, first. As far as Delhi NCR region is concerned, of course, the cases are not very high at the moment, but there have been measures which have been taken by the state administration to ensure that the spread of COVID is checked. Take us through what measures have been taken by both the Delhi and the UP government. Okay, we seem to have lost that line with Rajat, and let me go across to my colleague Deepak, who's also joining us from Haryana. Deepak, over to you. Take us through the latest updates from Haryana, the number of cases and the measures which have been taken by the Haryana government to check an uptick in the COVID cases. Of course, there was a mock drill also, which was conducted just a few days ago. बिल्कुल, अगर हम बात करें, क्योंकि इस वक्त एक बार फिर से कहीं ना कहीं एक संकट, एक चुनौती के तौर पर सामने, और ऐसे में अगर हम बात करें हरियाणा सरकार की, हरियाणा की, क्योंकि केंद्र सरकार की इस तरीके से वार्ता के बाद, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से वार्ता के बाद हरियाणा सरकार के द्वारा भी गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई। हालांकि फिलहाल अस्पतालों में ये कहा गया है कि मास्क का उपयोग करें, बिना मास्क के आए तो उनको दवाई नहीं मिलेगी अस्पतालों में। जहां तक आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े अभी हम कहें तो वो अभी ज्यादा नहीं है, लेकिन एहतियातन कहना कि ये संख्या बड़ी है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो सबसे ज्यादा जो मामले आते हैं वो या तो गुरुग्राम में आते हैं, फरीदाबाद में आते हैं, या फिर पंचकुला में आते हैं। और ऐसे में गुरुग्राम की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 7 मामले सामने आए हैं, 16 मामले एक्टिव है। अकेले एक जिले की बात की जाए, इसी तरीके से पूरे हरियाणा में खासकर मामले बात करें तो गुरुग्राम, फरीदाबाद या पंचकुला सामने आए, जिसको लेकर के फिलहाल गाइडलाइंस दी गई है। ऐसे में तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। हाल ही में मॉक ड्रिल जब पूरे देश में हुई तो हरियाणा में भी तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, चाहे वो सोनीपत की बात की जाए, गुरुग्राम की बात की जाए, पंचकुला की बात की जाए, करनाल की बात की जाए, फरीदाबाद की बात की जाए, तमाम जिलों में मॉक ड्रिल भी की गई। इसको लेकर के तमाम इसके एहतियातन कदम को लेकर, और न केवल सरकारी बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटलों का भी जायजा लिया गया कि किस तरीके की परिस्थितियां हैं। हालांकि खुद सरकार का कहना है कि उनके पास जो अभी तक जानकारी है कि मामला जरूर बढ़ेगा, उसको लेकर तमाम एहतियात बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि बया हो। लेकिन फिलहाल तमाम अस्पतालों को इसकी तमाम तैयारियों के लिए कहा गया है। तमाम चीफ मेडिकल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट के जो है उनको ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने यहाँ पर पूरी डेली रिपोर्ट जो है वो सरकार को दे। तो इसको लेकर के सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है। हरियाणा की अगर बात की जाए, क्योंकि दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा आता है, चाहे वो फरीदाबाद की बात करें, सोनीपत की बात करें, बहादुरगढ़ की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, तो ऐसे में तमाम गाइडलाइंस को लेकर के सीधे तौर से सख्ती के साथ पालना हो, इसकी अनदेखी ना हो, इसको लेकर के सरकार की तरफ से तमाम दिशा निर्देश फिलहाल दिए गए हैं। जी। All right, Mohit Gupta is also joining us from Aligarh. Mohit, take us through the guidelines which have been issued by the Uttar Pradesh government. Again, the case is not very high, but Indian states at their highest level of alertness, ensuring that we don't see a repeat of what we had seen a few years ago. देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि देखिए, अगर हम अलीगढ़ की बात करते हैं तो अलीगढ़ में अभी तक जो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट किए थे BF6, उसको लेकर अभी भी कोई भी कोरोना का मरीज अब तक सामने नहीं आया। लेकिन अगर वही बात करते हैं हम स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मॉक ड्रिल की तैयारियां पूरी कर ली है, चाहे वो L1, L2 या L3, यानी कि कोविड के जितने भी अस्पताल है उनको पूरी तरह से तैयारी करनी है। और खास ही बात में, क्योंकि जिस तरीके से हमने कोरोना की पिछली लहर को देखा था, उसमें ऑक्सीजन की लगातार कमी पड़ी हुई थी, तो ऑक्सीजन की अब की बार कोई कमी ना पड़े, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से लगा। देखिए, हम अलीगढ़ में खुद मौजूद है, लेकिन अलीगढ़ में अगर कोरोना की ताजा हालत की अगर हम बात करते हैं तो अभी तक यहाँ पर कोई भी कोरोना का मरीज सामने नहीं आया। लेकिन लोग बागों में अवेयरनेस
करने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार मुस्तैद है। हालांकि देखिए पीछे अगर मैं तस्वीरों की बात बताऊं तो यहाँ पर कोई भी मास्क लगाकर अभी तक नहीं घूम रहा, लेकिन गाइडलाइन एक तरीके से जरूर जारी कर दी है। जितने भी अस्पताल है अगर वहां पर अगर आप जाएंगे तो वहां मास्क कंपलसरी हो चुका है, यानी कि मास्क लगाकर ही आप कोई भी दवाई को ले पाएंगे। यानी कि साफ तौर से कहा जाता है BF7 को लेकर अलीगढ़ में पूरी तरह से तैयारियां चाको चौबंद स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कर ली गई है और साथ ही साथ में मॉक ड्रिल कर लिया गया है। मॉक ड्रिल के अलावा जो भी अगर देखिए, क्योंकि देखा यही जा रहा है कि क्योंकि आगरा में कोरोना के मरीज मिल चुके हैं, लेकिन अलीगढ़ में अब कोई भी अगर बाहर से अगर व्यक्ति आता है तो उसकी कोविड की जांच कराई जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से लगातार पहले देखा जा रहा था कि जगह जगह में जितनी भी सरकारी शाखाएं होती थी वहां पर कोविड हेल्प डेस्क बनाई गई थी, उन कोविड हेल्प डेस्क को दोबारा से सुचारू रूप से तैयारी की गई है। चाहे वो SSP कार्यालय हो, चाहे वो DM कार्यालय हो या अन्य जितने भी सरकारी कार्यालय हो, वहां पर जो है कोविड हेल्प डेस्क बनाने की तैयारी कर ली गई है। अगर कोई भी एप्लीकेशन दे जाएगा उसको कोरोना चेक कराया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से चाइना से निकलकर BF7 एक भयावह रूप धारण कर रखा है, जिसके स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारियों से हमारी बात हुई, उनका साफ तौर से यही कहना है कि जिनको पहले भी कोविड हो चुका हो, अगर ये जो कोरोना वायरस है अगर एक बार अगर आपकी लपेट में आता है तो ये पहले से ज्यादा घातक है और साथ ही साथ में आपको फिर दोबारा से कोविड हो सकता है। इसको लेकर लगातार जिला प्रशासन की बात करें या स्वास्थ्य विभाग की बात करें, लगातार अवेयरनेस की जा रही है, जगह जगह टीमें लगाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनकी ट्रैवल हिस्ट्री देखी जा रही है। कहीं बाहर से आने वाले लोग अगर अलीगढ़ में प्रवेश करेंगे तो वो अपना कोविड चेक कराने के बाद ही प्रवेश कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिला प्रशासन और जिला स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अब लगातार मुस्तैद है। जो इसी के चलते हुए मॉक ड्रिल कराएगी और मॉक ड्रिल के बाद में अब जितने भी सरकारी शाखाएं और जितने भी स्वास्थ्य विभाग की शाखाएं वहां पर अगर आप लोग अगर दवाई लेने जाते हैं तो मास्क कंपलसरी कर दिया गया है। और साथ ही साथ में अगर आप कोई भी एप्लीकेशन वगैरह देने के लिए अगर किसी भी विभाग में जाते हैं तो आपका कोविड टेस्ट परमानेंट कर दिया गया है। जी All right, stay with us both of you. Dr. Anil Arora is also joining us. He is the head of the gastro department from the Sir Gangaram Hospital. Morning, sir. Thank you for joining us on NewsX. You just heard my colleagues. They were bringing us reports from throughout the country. Recommendations, sir, have been issued by the state governments. It's recommended to wear a mask, social distancing recommended at this point of time. But nobody is really following it. What do you think, sir, as a health expert, is the need of the hour? Yeah, thank you, Meenakshi, for having me on your show. I think there is a discrepancy between the degree of preparedness on the part of the government agencies and the people's assessment of the ferocity of the so-called next wave of the COVID-19 infection. The reason is the new variants, which is called BF7, which is the reason for the recent resurgence of the infection, be it in China, South Korea, Japan, as well as in the United States, is just a sublineage variant of the Omicron virus. Fortunately, in India, most of us have already been exposed during the dubious second and the third wave, that is 2021 and 22, and we have had enough of natural immunity. In addition, we have already been bestowed with a double vaccination to the tune of about 75% of the population, adult population in India, has been vaccinated with a double dose. So hybrid immunity has given us a good protection. So far as this virus is concerned, there is nothing to suggest that this is more dangerous. This is something which is going to be lethal, or this is something which is going to swamp up all the ICUs and the ventilators and the infrastructure of the medical system, as had happened during the Delta wave in 2021. There is nothing wrong in being prepared, but I think the unnecessary alarm and the concern about it will only dampen our spirit of celebrating the New Year's. We certainly should keep using masks. There is nothing wrong in it. Other than preventing infection, it can also prevent a number of other season-related flu-like illnesses. Anything which spreads by the droplet infection. So I think maintaining a social distance and continuing to wear masks is a welcome step. And there is nothing wrong in government trying to step up the health infrastructure and have mock drills, because at least you are prepared for an eventuality. But personally, I don't think we are going to have as ferocious or devious wave as we had during the 2021 with Delta and subsequently with the Omicron virus infection. Okay, so stay with us. My colleagues are also live with us. Shakti Kumar has also joined us from Bihar. Shakti, take us through the number of COVID cases which have been reported in Bihar, and secondly, the guidelines which have been issued by the state government. Of course, the government's telling people to wear masks, follow social distancing, but are you seeing that on the ground as well or not?
देखिए, कोविड के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, देश में चौथी लहर की आशंका बताई जा रही है। और अब अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में हालांकि केस जो है काफ़ी कम है। राजधानी पटना में जो है एक पॉजिटिव केस है, लेकिन जो विदेशों में आपको बताया कि गया में जो है कालचक्र पूजा चल रहा है, जहाँ दलाई लामा जो है 1 महीने के प्रवास में आए हैं और यहाँ पे तकरीबन आज से 3 दिवसीय जो है कार्यक्रम चलने वाला है, जिसमें कि तमाम विदेशी खास करके 50,000 से के करीब तकरीबन जो है विदेशी जो भक्त हैं वो आए हुए हैं गया में। और उन्हीं में से जो है कई विदेशी जो है खास करके 19 जो है कोविड पॉजिटिव उनका टेस्ट आया था। उसके बाद जो है बिहार प्रशासन जो है वो जगह हलचल में आई है और तमाम तरह की जो है फिर से टेस्टिंग की जा रही है। एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशनों पर जो है कोरोना की जाँच की जा रही है और तमाम जो संस्थान है, खासकर सरकार ने कहा कि बिहार सरकार ने कि सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का उपयोग जो है लोग करें, ताकि कोविड से जिस तरह से पिछले कोविड लहर में जिस तरह से प्रोटोकॉल का पालन किया गया था, उसी तरह के गाइडलाइन जो है इस बार भी जारी की गई है। हालांकि अगर हम बात करें लोगों की, तो लोग में अवेयरनेस अभी भी नहीं है। लोग बहुत इक्के दुक्के लोग ही जो है वो मास्क पहने नज़र आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो संख्या है लोगों की वो मास्क नहीं पहन रहे हैं। तो इससे जो है खतरा जो है आने वाले कुछ दिनों में जो है बिहार में जो है कोविड के केसेस में इसमें जो है वृद्धि हो सकती है। जी Right, so cases, of course, there is the fear that cases could rise. Shakti, stay with us. Dr. Arora, if you could come in here, as a medical expert, as a health expert, what advice would you like to give the people at this point of time? Because it's close to New Year's, that's when, people congregate, they gather together. It's a time, of course, for revelry and partying, but I guess all of that can wait. Even if you are indulging in a get-together, social distancing, of course, is the least which one can follow. Absolutely, Meenakshi, I totally agree with you. When the prevention of the bad impact of the health comes on to the human beings, I think you as an individual are an equal stakeholder in protecting yourself. So wearing mask and maintaining a social distance and avoiding the social gatherings, at least a time when there is a resurgence of the COVID-19 infection, it costs nothing. It doesn't even cost you a penny. But this is something which you owe to your own health. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.